morning students, welcome to SGI online class 8 हिंदी लिटरेचर लेसन 1 हम दीवानों की क्या हस्ती। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हम दीवानों की क्या हस्ती नामक कविता के प्रथम व द्वितीय पद्यांशों को पढ़ा व समझा। आज मैं आपको उसके आगे की जो कविता है उसका साफ वाचन करते हुए कठिन शब्दों का निवारण करते हुए व्याख्या को समझाऊंगी। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। पिछले पैराग्राफ में जो दीवाने हैं, जो देशभक्त हैं, वह वहां जब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जा रहे थे तो वहां के लोग क्या कर रहे थे? आंसू बहा रहे थे। तो उसी के आगे है दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। उन्होंने उन लोगों से कुछ अपनी बात कही और उनकी कुछ बातों को सुना। उनमें से जब वह जा तो कुछ हंस रहे थे और कुछ रोए और फिर उनके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। छककर सुख दुख के घूंटों को हम भाव से पिए चले। वह कहते हैं हम जी भरकर सुख और दुख के जो घूंट होते हैं उनको अपने भाव, जो हमारे आंतरिक विचार हैं, उनमें एक साथ से हम पी के आगे चल रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर कवि ने भिखमंगों से जो बात भिखमंगे शब्द उन्होंने किया है कि दुनिया का यथार्थ स्वरूप को उन्होंने बताते हुए कहा है कि व्यक्ति जो लेना जानता है देना नहीं जानता है, उसे भिखमंगे। उन्होंने कहा कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, अर्थात ऐसे संसार में जहाँ व्यक्ति सिर्फ लेना ही जाने और देना ना जाने, ऐसे संसार में हम अपना स्वच्छंद माने होता है सरल स्वच्छ प्रेम लुटाकर आगे बढ़े। हम एक निशानी उर पर, उर का अर्थ होता है हृदय, ले असफलता का भार चले। जो दीवाने हैं उनका कहना है कि हम एक निशानी अपने दिल पर इस प्रकार से हृदय में लिए हैं कि हम असफलता, अभी भी सफलता प्राप्त नहीं की है। देशभक्ति के लिए जो उनका कदम है वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनकी मंजिल अभी उन्हें मिली नहीं है। तो वही असफलता का भार वह अपने हृदय में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम मान सहित अपमान रहित जी भर कर खुलकर खेल चुके। वह कहते हैं कि हम सम्मान के साथ में और अपमान के साथ में जी भरकर, अर्थात वहां पर उन भावों को सह करके खुलकर खेल चुके। वहां पर हम हर एक जो मार्ग है ये दीवानों का, उस मार्ग पे अच्छाई और बुराई सभी को एक साथ जी करके वह आगे बढ़ रहे हैं। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हाथ चले। वो जो दीवाने हैं, देशभक्त हैं, वह कहते हैं कि हम हंसते हंसते अर्थात खुशी खुशी से आज यहाँ पर धरती माँ के लिए, देश की धरती माँ के लिए प्राणों की बाजी हाथ चले, अर्थात अपने प्राणों को न्यौछावर कर चले। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। वह कहते हैं कि इस संसार में आने पर हमारे साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, वह तो धरती माँ को शीश नवाते हुए इस संसार से मुख मोड़ कर आगे बढ़ चले हैं। अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान द्रवों से छोड़ चले। जब वह देश को स्वतंत्र नहीं करा पाए तो काफी उन्होंने बातें सुनी और वह सारी बातें अपने अधरों पर, होठ माने अधरों पर लेकर के वरदान द्रवों से छोड़ चले, अर्थात उन्होंने ऐसा वर दिया कि देश आजाद हो और आगे सभी स्वतंत्र हो। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला। जो देशभक्त है, सेनानी है, वह क्या कहते हैं कि अब इस संसार में हमारा अपना मतलब हमारा क्या है और दूसरों का क्या है, आबाद रहे रुकने वाले। वह कहते हैं जो भी इस संसार में बचेगा, जो भी इस संसार में रुकेगा हमारे जाने के बाद, वह हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वह कहते हैं कि जो यहाँ पर रुकेंगे वह देश की आजादी को देखेंगे और
वो लोग जाते समय उन लोगों में दीवानगी भर देते हैं, अर्थात देश प्रेम की जो ज्योति है उनमें जगा देते हैं और कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात जब तक हमारे शरीर में श्वास थी, जब तक हम बंधे थे इस संसार में देश के प्रति प्रेम जगाने के लिए, अब हम उन बंधनों को स्वयं छोड़कर जा रहे हैं, अर्थात बंधन तोड़ करके हम जा रहे हैं और देश को एक नया प्रकाश दे रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, welcome to SUI online classes of English. Students, I am A.K. Dwivedi and from today I will teach you English. Okay, from the beginning. Today's topic is chapter number 1, revision. Okay, in grammar, chapter number 1, revision. So students, try to understand well. Students, in this exercise the question is fill in the blanks with appropriate adjective. Okay, that means इस exercise में आपको suitable adjectives fill करना है। जो gaps दिए गए हैं उनमें आपको suitable adjective, suitable means whatever suitable, जो भी हो suitable हो। There may be more than one option, एक से ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं। एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर क्लासेस में। ओके, लेट अस स्टार्ट इट। नमन, फर्स्ट सेंटेंस, नमन हैज डैश मनी टू परचेज अ बाइक। मीन्स क्या है इसका? नमन के पास बाइक खरीदने के लिए पैसा क्या है? नहीं है, नो मनी। तो हियर सुटेबल एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड नो। अमन हैज नो मनी टू परचेज अ बाइक। अमन के पास बाइक खरीदने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है। You can also use some here. Aman has some money to purchase a bike. Okay, और भी हो सकते हैं। You can also use Aman has a lot of money. A lot of. Okay, therefore you can use no, some, a lot, बहुत सारा। Okay, but I have used here no. Now second one, it was really a journey for all of us. Students, इसका मीन्स क्या है? It was really, ये वास्तव में, journey means यात्रा, for all of us, हम सब के लिए, ये हम सब के लिए यात्रा थी। कैसी? What kind of journey? जर्नी होती है लॉन्ग, और कैसी होगी? ट्रबलसम, टेडियस, थका देने वाली, बोरिंग। जर्नी आइदर मे बी इंटरेस्टिंग, लॉन्ग, बोरिंग। ओके, तो यू कैन यूज वन ऑफ दीज वर्ड्स। आई विल यूज हियर इट वाज रियली अ लॉन्ग जर्नी। जर्नी में बी लॉन्ग, शार्ट, tedious, interesting, troublesome. Okay, it was really a long journey. Next, Kamal needs dash shoes than these. Means क्या है? कमल को इन शूज की उपेक्षा। इन शूज मतलब ये पास, these is demonstrative adjective that denote to the things nearby. यानी इन जूतों की उपेक्षा, सिवाय वे जूते चाहिए। तो according to these, here we will use those. Okay, जो distant की things को
डिनोट करता है दोस। कमल नीड्स दोस शूज दैट मीन्स इन शूज की उपेक्षा वे वाले शूज चाहिए। ओके, दोस कैन बी फिल्ड हियर। नेक्स्ट, जीनत सा अ डैश मॉन्यूमेंट लास्ट ईयर। मीन्स क्या है? जीनत ने लास्ट ईयर मॉन्यूमेंट देखा। मॉन्यूमेंट कैसा होगा? ब्यूटीफुल, एंशिएंट, ओल्ड, ह्यूज, बिग। ओके, देयर आर सो मेनी वर्ड्स कैन बी फिल्ड हियर। ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट आ लगा है तो हम बेटर है आ ब्यूटीफुल, आ ब्यूटीफुल। ओके, जीनत सा ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट लास्ट ईयर। इफ वी रिमूव आ, इफ देयर वाज एन, अगर यहां पे एन होगा तो वी कैन राइट हियर एंशिएंट। एंशिएंट आर ओल्ड। ओके, एंशिएंट आर ओल्ड कैन बी रिटन इफ देयर हैड बीन आर्टिकल एन, बट अकॉर्डिंग टू आ दिस इज बेटर टू राइट हियर ब्यूटीफुल, बिग, लार्ज। ओके, नाउ सी नेक्स्ट सेंटेंस। आर देयर डैश बीन vegetables in the refrigerator? This is interrogative sentence. क्या रेफ्रिजरेटर में हरी सब्जियां हैं? कैसी? कुछ हरी सब्जियां, some. ओके, तो here it is suitable to fill some. Are there some green vegetables in the refrigerator? क्या फ्रिज में कुछ हरी सब्जियां हैं? ओके, now you can also use here fresh green vegetables. Fresh, okay, fresh green vegetables. Now next, कौशिक bought dash rice. कौशिक ने चावल खरीदा, कितना? क्वांटिटी। Here adjective or quality will be used. कौशिक ने चावल खरीदा, कितना? क्वांटिटी 2 kg, 1 kg, 4 kg. You can fill anything 2 kg. मैं लिख रहा हूं 2 kg. Okay, this is adjective of quantity. कौशिक bought 2 kg rice. You can also use some rice. Okay, some can also be used. Now students, next, nobody likes. Nobody, कोई भी, likes, पसंद करता है मैन आदमी को। कैसे आदमी को? अब मैन कैसा हो सकता है? नॉटी हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है, चीट हो सकता है, बैड हो सकता है, विकेड हो सकता है। व्हाटएवर यू कैन फिल हियर। नोबडी लाइक्स, आई विल फिल हियर डिसऑनेस्ट मैन। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। कोई भी बेईमान व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। ओके, आई सा मैनी डैश पीपल इन द मीटिंग। मैंने मीटिंग में बहुत सारे लोग देखे। लोग कैसे हो सकते हैं? हियर नाउन इज पीपल, और पीपल कैसे हो सकते हैं? वाइज, इंटेलिजेंट, गुड, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, ऑनेस्ट। तो व्हाटएवर यू लाइक कैन फिल हियर। मैं यहां पे क्या बोलूंगा? आई सा मैनी वाइज पीपल। ओके, मैनी वाइज पीपल इन द मीटिंग। नाउ नेक्स्ट, भूषण सा अ डैश पेंटिंग। भूषण ने पेंटिंग देखी। पेंटिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग? पेंटिंग में भी ब्यूटीफुल, लवली, इंटरेस्टिंग। ओके, तो भूषण सा अ लवली पेंटिंग। आई विल राइट हियर लवली, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लवली, ब्यूटीफुल। ओके, नाउ लास्ट सेंटेंस। रोशन इज द डैश बॉय इन द क्लास। रोशन कक्षा में बालक है। कैसा हो सकता है? सबसे अच्छा हो सकता है।
सबसे लंबा हो सकता है. This is superlative because before the gap there is article the, and if there is article the, we will always use superlative degree. So Roshan is the tallest boy in the class. Roshan is the wisest boy in the class. Roshan is the best boy in the class. I will write here the tallest. Okay, TALLEST. But you can also write wisest, the best boy. Okay, students, today's class is over. Thank you for attending the class. Students, you have to seriously note down every material whatever is explained here in your fair notebook in good handwriting. Now next day I will explain you. This is topic number A, exercise number B. I will explain you exercise number B. So try to do it yourself. I will teach you tomorrow. Okay. Good morning students, I welcome you on to the online classes of SGOI. In the last class we have discussed the basic information regarding the chapter called rational numbers. Okay, today we will be starting with the exercise, that is exercise 1A. In exercise 1A, question number 1, it says express minus 64 upon 112 as a rational number with denominator is equal to 7. Question number 1 says you have to express this minus 64 upon 112 as a rational number with denominator 7. So this denominator is 112, we have to make it equal to 7. That can be done by reducing this rational number. You can clearly see that this minus 64 upon 112 has 4 as a divisor. We will be dividing minus 64 with 4. It will be minus 16. And then dividing this 112 with 4, it will give us 4 to the 8 and 4 is the 32. It is minus 16 upon 28. Further we can reduce it again with 4. It will be 4 4 is 16 minus 4 and 4 7 is 28. Ultimately we are getting minus 4 upon 7. And this rational number has 7 as a denominator and which was required in the question. Hence this minus 4 upon 7 is the answer of question number 1. Now this question number 3, it is written express the rational number into standard form. I have skipped question number 2 because question number 2 is similar to question number 1. So that can be done by yourselves. Okay. Now this question number 3, in this question you have to express the rational number into standard form. Before starting that, I would like to tell you what does standard form means. Suppose you are given with a rational number p upon q. Then standard form means there should not be any common divisor between p upon q. That means p और q के बीच में कोई भी common divisor नहीं होना चाहिए. ठीक है, तभी वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो पाएगा. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. पार्ट नंबर सेकंड. It is written minus 14 upon 49. It is written minus 14 upon 49. And you have to express this rational number into standard form. मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में कोई भी common divisor नहीं होना चाहिए. अभी आप देख रहे हो minus 14 और 49 के बीच में 7 जो है वो एक common divisor है. ठीक है, तो इसको reduce करना पड़ेगा. When we will be dividing this 14 and 49 with 7, it will give us 7 2 जा 14 and 7 7 जा 49. That is minus 2 upon 7. Now 2 and 7 does not have any common divisor between them. Hence this is the standard form of minus 14 upon 49. Okay, now question number 4, it is saying compare the following rational numbers. Compare करने का मतलब है you have to tell whether this number or that number is greater.
मतलब कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, इस वाले क्वेश्चन में यू हैव टू टेल दैट, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी टेकिंग द एलसीएम ऑफ 11 एंड 18, ओके। सो एलसीएम ऑफ 11 एंड 18, ठीक है। 11 और 18 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज इक्वल टू 198, ठीक है। 11 और 18 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी इक्वल टू 198। अब आगे क्या करना होगा, यू हैव टू चेंज दिस डिनोमिनेटर इनटू 198 एंड दिस डिनोमिनेटर 18 टू 198 एज वेल, है ना। दोनों डिनोमिनेटर्स को आपको 198 बनाना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो हियर इट इज 10/11। अगर 11 को 198 बनाना है तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 18, और अगर डिनोमिनेटर को 18 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हियर एंड 17/18। अब इस 18 को 198 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। If denominator is being multiplied with 11, then numerator has to be multiplied with 11 as well. Hence, it will be 11. So it will give us 180/198, and it will give us 17 is 170. 170 plus 17 will be 187. 187/198. Now you can see both the rational numbers have the same denominator, hence we can decide it from their numerators, and clearly 187/198 is greater than 180/198। इसलिए इसके corresponding कौन सा रेशनल नंबर था, इससे corresponding ये रेशनल नंबर है, hence 17/18 is greater than 10/11। In question number 5 it is saying arrange in ascending order. You all are very much aware about what does ascending order means. Ascending order means from the least value to the highest value. I am not telling this question because I have already told you in question number 4 how to compare two rational numbers, and by that comparison you can easily find out that which rational number is greater and which rational number is smaller. So I am skipping question number 5, moving to question number 6. In question number 6 it is saying represent the following into number line. Represent the rational number into number line, okay. What does number line mean? You all are very much aware about the representation of all the integer in a line is termed to be as the number line. In between there is 0, and in this side all are the positive integers, and in this side all are the negative integers, है ना. This is called the number line. So in class 6th and 7th you have studied how to represent the integers on a number line, but today we are going to represent the rational numbers on a number line. तो rational numbers को कैसे number line में represent करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे. I am taking an example, question number 6 second part. It is saying 14/3. 14/3 को आपको rational number line में क्या करना है, represent करना है. तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें, स्टेप 1 ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 14/3 है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाया करता है ना, और ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, 14 को 3 से डिवाइड करोगे, है ना. तो 14 को 3 से आप डिवाइड करोगे, इट विल बी 3 4 12 और 2 रिमाइंडर बच रहा है ना. दैट मींस ये जो नंबर है ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा. तो इट विल लाई बिटवीन 4 and 5, है ना. पहली चीज हमें ये पता चल गई कि क्वेश्चन क्योंकि 4 आ रहा है और कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है. अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो क्या होगा, 4 whole 2/3, ठीक है, 4 whole 2/3. अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, इसलिए नेगेटिव साइड की नंबर लाइन हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है. एक नंबर भले लिख दो, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. या 0 से नहीं स्टार्ट करके आपको पहले से पता है कि 4 और 5 के बीच में नंबर लाइन करेगा, तो 4 और 5 को यहाँ पे बना दो केवल, ठीक है. तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने डिवीजन हमको बनाने हैं, ठीक है. तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है वही नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे क्या करने होता है, वो बनाने होते हैं. यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिविजन्स कितने बनाने होंगे, 3 डिविजन्स बनाने होंगे.
ठीक है, 3 डिवीजन बनाने के लिए कितनी लाइन खींचोगे आप? 2 लाइन, है कि नहीं? जब आपने 2 लाइन खींची तो एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन और तीसरा डिवीजन, है ना? बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी वो सही दिखेगा कि आपने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है नंबर लाइन का, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो नंबर है दैट इज 4, यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा 4 होल 1/3, कितना होगा? 4 होल 1/3। यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा 4 होल 2/3, ठीक है? और आपको रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करना है? 4 होल 2/3। दैट मींस ये वो जगह है जहां पे आपका रैशनल नंबर 4 होल 2/3 लाया करेगा। इसको आप नाम दे दो कुछ भी a, ठीक है? तो a इज अ पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट 4 होल 2/3 या और 14/3, है ना? तो यही एक प्लेस है। ओके, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। बाकी पार्ट्स आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेगेटिव होगा नंबर तो आप नेगेटिव साइड की नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ पॉजिटिव साइड के पॉजिटिव साइड की नंबर लाइन हमने बनाई थी। In question number 7, it is saying state whether the given statements are true or false. I want you to do all these questions by yourself because in the first class I have already told you all the basic things related to the rational numbers. And question number 8 is also same as question number 6. That means you have to represent the rational numbers on a number line. So that's it for today. This is the completion of exercise 1A. In tomorrow's class, we'll be starting with exercise 1B. Thank you. See you in the next class. Hello students, let's see what we will study today. Our first topic will be kinetic theory of matter. Second is example of existence of motion in molecules, and the third one is arrangement of the molecules in matter. Now our first topic is kinetic theory of matter. So let's see what this theory says. According to kinetic theory of matter, this is kinetic theory of matter written. According to kinetic theory of matter, a matter is composed of large number of small particles that are always in motion. It means a matter is made up of large number of particles, smaller particles that are always in motion. And there are few more points regarding this theory. First is motion of particles. As we have already discussed, a matter is made up of large number of particles that are always in motion, which do not stop over any length of time. It means the smaller particles that are molecules or atoms that never stop in motion. Our second point is effect of temperature. In effect of temperature, as we increase the temperature of that matter, the motion of molecules become increases, and as we decrease the temperature of the matter, the motion of the molecules inside the matter will decreases. It means temperature is directly proportional to the motion of particles in matter. If this increases, then this will also increases, and if it decreases, then motion of particles in matter also decreases. Our next point is effect of temperature and intermolecular space. Force of attraction. See what is force of attraction. Between two molecules there is force of attraction exists.
But if the molecule is made up of same kind of elements, as we have already discussed, we have discussed it in our previous classes. If a matter is made up of similar kind of elements, then these elements are called atoms. And between atoms, the force of attraction is called force of cohesion. And if a matter is made up of different kind of elements, which is called molecules, then the force of attraction between molecules is called, force of attraction amongst molecules is called force of adhesion. Okay, students. Now, next point in this theory is intermolecular space and intermolecular force of attraction. This is intermolecular is written. So what is intermolecular space? Students, see here. As we have already discussed, between two molecules there is some space exists. So you can see here, this is a space, here is a space. It is called intermolecular space. This is called intermolecular space, and there also a force exists called intermolecular force of attraction. This is intermolecular force of attraction written here. So see here, as this space increases, if a molecule are far from together, then the intermolecular space is inversely proportional to intermolecular force of attraction. What it says? If the space between molecules increases, then intermolecular force of attraction decreases. And if the molecules come together, it means intermolecular force of attraction decreases, then intermolecular force of attraction increases. It means if it increases, then it will decrease, and if it will decrease, then it will increase. So this is our kinetic theory of matter. The next topic is example of existence of motion in molecules. So see what is the example. Here we will take the example of leakage of LPG gas. So students, assume that there are LPG gas leak in a room where there is no motion of air. You can also consider in the kitchen. So in a room, LPG gas is leak. Then what happens? After a few seconds, the smell of this LPG gas spreads all over the room. How this happens? And we have already considered that there is no motion of air. This is because of existence of motion in molecules. As we have already discussed in kinetic theory of matter, that molecules are always in motion. This is the reason
the LPG gas spreads, the smell of LPG gas spreads all over the room. And this example proves that the molecules are always in motion. Now we will learn arrangement of molecules in matter. Third is arrangement of the molecules in matter. In matter there is three states: solid, liquid, and gas. So here we will consider three columns. This is the basic structure of, this is solid, this is liquid, and this is gas. Now here we will see the intermolecular space is very less. This is very less. Intermolecular space is very less, and in kinetic theory we have discussed intermolecular space is directly proportional to what? Intermolecular force of attraction. It means the force of attraction is high in case of solid, and here intermolecular space is, this is intermolecular space, is comparatively large. So what happens? Intermolecular force of attraction is less compared to solid. And if we take the example of gases, here intermolecular space is very large. So what happens? The intermolecular force will be very less. Now see what will happen. Intermolecular force of attraction is high. So it takes in the molecules of solid in a fixed position. This intermolecular force of attraction, this is very high. Then what will happen? This force will keep the molecules in a fixed place. That's why the solids have definite shape and volume. And in case of liquid, intermolecular force of attraction is less. Then what will happen? Liquids don't have definite shape. Due to less intermolecular force of attraction, liquids don't have definite shape. It will take the shape of that container in which this liquid is kept. But there is force of attraction exists. So what happens? The volume of liquid is definite. And if we take the example of gases, the intermolecular force will be very less. It is very less. Then what will happen? Gases have neither definite shape nor volume.
Gases have neither definite shape nor definite volume. So this is the arrangement of molecules in a matter. Okay, thank you class. Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group Institution. Today, we will discuss the chapter on matter. This is the basic chapter of chemistry for class 8. है ना? इसमें आज हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर सबसे पहली
Have a marvelous morning to all of you. This is your biology class for class 8th. And my today's topic is transport of materials in unicellular and simple multicellular organism. My today's topic is transport of materials in unicellular and simple multicellular organism. Students, all of you know that what is transport? Transport is carrying out substance from one part of body to another. So, what is unicellular organism? Unicellular organism means the organisms that are made up of only one cell. Single cell organisms are called unicellular organisms. So, there is in transportation, the carrying out of substance from one part to another part of the body. This is the transport. And in unicellular organisms, because they are made up of only one cell, so the path is smaller. Path is smaller because they carrying out substance from here to here, so path is smaller in comparison to multicellular organisms, because multicellular organisms are made up of more than one cell, so the path is smaller in unicellular organisms. So students, transport of materials occur in organisms in two ways. First is osmosis and second is diffusion. So, in unicellular organisms, transport of materials occurs by the process diffusion. And what is diffusion? If you talk about the diffusion, so diffusion is the movement of substances from high concentration region to low concentration region. So what is diffusion? Diffusion is the method by which the movement of substance occur from the high concentration region to low concentration region. This is the diffusion. So what do you mean by the high concentration region to low concentration region? Means where the molecules are more in number. We can say that high concentration region. Where the molecules are less in number, we can say that low concentration. Suppose that you have 50 balls. And one more thing. This movement occur until they spread evenly. They spread evenly. Means this movement occur from high concentration region to low concentration region until the both are in same concentration. Means until they are spread evenly. जब तक उन दोनों में concentration same नहीं हो जाता. So what do you mean by high concentration, low concentration? For example, you have 50 balls and you have 2 bags. In one bag there are only 20 balls. In second bag there is only 30 balls. So
The concentration is high in which bag? In bag B. In bag B, the concentration is high because the more balls are present in there. If we transfer the balls from bag B to 1 and they are until they are equally spread. So there are 25 balls in each bag. Then we can say that concentration is equal in both the bags. So this is the concentration. Okay, students? So students, diffusion is a major method by which transport occur in unicellular organisms and simple multicellular organisms by the method diffusion. And unicellular organisms like Chlamydomonas or so student, diffusion is a major method by which transport of material occur in unicellular organisms and simple multicellular organisms by the method diffusion. So by the method diffusion, transport occur in unicellular and simple multicellular organisms. So what is the example of unicellular organism? Unicellular organism like Chlamydomonas. And simple multicellular organism Spirogyra. In unicellular organisms like Chlamydomonas, in simpler multicellular organisms like Spirogyra. The transportation occur in these organisms by the method of diffusion. So students, this is the transport of materials in unicellular and simple multicellular organisms. That's enough for today. Have a nice day, students. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you Geography first chapter, representation of geographical features for class 8th. And now today I will continue the same chapter. In my previous lecture, I have explained you different methods representing relief on map like haching, hill shading, form lines, triangulation method, spot heights and benchmarks. And now today my topic is interpreting contours on the topo sheet, height and shape. So student, first of all you want to know what is contours. Contour. The topographical maps are a composition of visible landscape comprising both फिजिकल फीचर्स एंड मैन-मेड फीचर्स. तो बच्चों जो टोपोग्राफिकल मैप है वो किस चीज का कंपोजिशन है? लैंडस्केप का. ये दोनों फीचर को शो करता है. फिजिकल फीचर्स लाइक हिल, वैलीज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड मैन-मेड फीचर्स लाइक रोड, कैनल्स, settlements, triangulated heights. The three-dimensional physical features are represented by mean of contours and the human features are shown by mean of conventional sign and colors on topographical sheet. तो बच्चों जो three-dimensional फिजिकल फीचर्स हैं उसको किससे शो किया जाता है? मीन ऑफ कॉन्टूर से. और जितने भी ह्यूमन फीचर्स हैं उनको कैसे हम शो करते हैं? By mean of symbols or conventional sign. So is it clear? The three-dimensional physical features are shown by mean of contours. On the other hand, the human features are shown by mean of symbols or conventional sign. These mean of symbol and sign are called legend. Now, what is contour? A contour line is an imaginary line joining all places
which are at the same height above sea level. तो बच्चों कॉन्टूरिंग लाइन क्या होती है? ज्वाइनिंग लाइन होती है जो सभी प्लेसेस को क्या करती है? ज्वाइन करती है, which are at the same height, जिनकी हाइट क्या होती है? सेम होती है above sea level, sea level से. So contour line is an imaginary line joining all places which are same height above sea level. So contours is the most widely method to represent relief on the map. The density of contour represent the different slopes on the map. Index contours. The Ordnance Survey maps of 1.50,000 scale, जो हमारा सर्वे मैप है उसका स्केल क्या है बच्चों? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 50,000 किलोमीटर. तो 1 centimeter is equal 50,000 kilometer scale have contours drawn at the vertical interval of 20 meter. Essential of contouring. तो essential of contouring में बच्चों सबसे पहला क्या आता है हमारा? ये this is the picture of contours and this drawn at vertical interval of 20 meter. तो हर एक contours में कितना इंटरवल है बच्चों? 20 मीटर का इंटरवल है. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20 मीटर का इसमें इंटरवल है. These are contour lines. Now what things are essential of contouring? Contouring के लिए कौन सी चीजें essential होती हैं? सबसे पहला है बच्चों spacing, space होना. Contouring is a graphical method of representing the pattern of relief on the landscape map. तो contouring एक graphical method है represent करने का relief के pattern को on the landscape map में. Hence the spacing of contours determine the slope of the land. तो contour की spacing ही determine करती है land की slope कैसी है. Whether the land is steep slope or whether the land is gentle slope, it determined by the spacing of the contours. If contours are drawn close together, they indicate very steep slope. Look at this picture. This is the picture of spacing of contours. Students, you can see in this picture these lines are drawn very close together. So it shows very steep slope. तो ये क्या शो करती हैं बच्चों? Steep slope को शो करती हैं. So because they are drawn very close together. When contour lines are drawn further apart. अब इस पिक्चर में आप इसमें देख रहे हैं ये contour line बहुत दूर हैं. तो it indicate, it shows gentle slope. तो ये हमारा क्या शो करती है बच्चों? Gentle slope को शो करती हैं. So spacing of contours determine the slope of the land. If contour line are drawn close together, they show steep slope. If contour line are drawn further apart, they show gentle slope. Now student, features related to height and elevation of a landscape. तो features जो relate करते हैं height और elevation of the landscape. First है conical hill. A conical hill is shown by close contours, almost circular in shape, and spaces between contours are uniform. तो conical hill क्या होती है बच्चों? हमारी कैसे शो की जाती है? क्लोज कॉन्टूर से almost circular in shape. शेप में क्या होती है ये? सर्कुलर, गोल होती है. एंड स्पेसेस बिटवीन contours are uniform. A volcanic cone is an example of such a hill. तो इस हिल में, कॉनिकल हिल में क्या होता है कि वन साइड इसकी स्टीप स्लोप होती है और वन साइड क्या होती है बच्चों? जेंटल स्लोप होती है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द कॉनिकल हिल. वन साइड क्या है आपकी? स्टीप स्लोप है और वन साइड आपकी क्या है? जेंटल स्लोप है. Gentle slope. So as you all know, look at this picture. These are the steep and gentle slope. This picture is steep and gentle slope.
This is a figure of steep and gentle slope. So look at the picture. These lines, these contour lines are drawn close together. So it indicates, it shows steep slope. And on the other hand, these contour lines are further apart and this indicates gentle slope. So first is conical hill. Conical hill is shown by close contours and its one side in steep slope and the other side is gentle slope. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello everyone, this is your computer class 8E, chapter 1, operating system. Student, we discussed in previous class what is the operating system. Let's 1 minute we review definition of operating system. Operating system is an integrated set of programs which act as an interface between user and the hardware. It control and manage all over the activities of the computer system and also manage and control the resources of computer system. Okay, now what is the function of operating system? What is the function of operating system? There are following function display on your board. First is starting of a computer. Second is memory management. Third is resource management. Fourth is process management. And fifth is managing file and folders. Starting of computer is also called booting. ये definition भी पूछी जाती है कि what is booting. It is also called booting. Booting means or starting a computer means when we switch on the computer. Okay, operating system loaded in your memory from the computer. It is called booting. Okay, that I repeat my sentence. What is booting? When we switch on the computer, operating system is loaded into its memory. This process is called booting. Now, second function is memory management. Yeah, memory management means management of memory, management of main memory. Okay, now what is the memory management? There are following functions. First is it allocates the memory space. That means it distributes the memory space. It delocates the memory space after the task is completed. That means it free the memory when the task is completed. Now, third is it keeps track of data loaded. Okay, it keeps track of data loaded on your computer system. Now, third is resource management. Resource ka what is the meaning of resource? Resource is all the peripheral devices which are attached to the computer is called the resource management. That means all the input output devices. It assign the hardware and software. Okay, it assign the hardware and software as requirement. It keep track of process that require the same hardware and software simultaneously. Now, process management. What is the process management? A process is a task in execution. A process means जो काम हो रहा है. A process is the task that is executed. It also manages the processing of
folder that is stored on the hard disk. That means it organizes file and folders which are stored on your computer system. So these are the functions are operating system. Now next topic is type of operating system. First is single user, single task operating system. Second is single user multitask operating system, and third is multi-user multitask operating system. First, single user single task. As the name, single user means a single person can do at a time single task. That means a single user can do or can work on a system a single task. For example, DOS, disk operating system. It is a single user single task operating system. In this operating system, you can do a single task at the same time. Okay. Next, single user multitask operating system. Single user multitask means a single user can perform multitask or multifunction, multi-work can do on your computer at the same time. Suppose that, for example, सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल ही बता देती हूँ. For example, Windows. Okay, Windows is a single user multitask. How to work single user and multitask? Let's see. Suppose that you can listen music on your computer. Okay, listening a music. Clear? Writing a document. Downloading a file. Okay, now, and the fourth tasking, printing another document. So student, you see here, you can do 1, 2, 3, 4. These 4 tasks completed at the same time, like listening a music, writing a document, downloading any file on your internet, and the printing another document. These are multi-functions or multitask can do a single user at the same time. Okay, now third is multi-user multitask. Multi-user multitask is the example of Unix. Okay, Unix हो गया, Windows 10, Windows 7, etc. These are the multi-user multitask operating system. In that operating system, multi-user can do multiple functions or multiple tasks perform at the same time. For example, railway reservation. Okay, you can book a movie ticket, online shopping. These are the multi-user and multitask. In bank or railway, in banking field or the railway reservation, use multi-user and multitask operating system. Okay student, this is sufficient for today. Thank you and have a nice day.